सवाल जो है 50 किलो वोल्ट एम्पियर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स on the primary and 100 turn on the secondary. The primary is connected to 4000 volt 60 Hz supply. Determine the maximum value of flux. Generally, the mutual induction between secondary and primary windings is responsible for the working of the transformer in an electrical transformer. देखिए यहाँ पे मेन फ्लक्स, देखिए लोड, V1 सप्लाई, A and B, C and D limb. The relationship between the produced EMF E in the coils binding of N turn can be obtained by E RMS बराबर 4.44 इंटू F इंटू N max, where F frequency in hertz, N number of winding turns, high max maximum flux density in Weber. In case of transformers, the maximum flux density at normal voltage and frequency shall be such that the flux density under overfluxing shall not exceed 1.9 Tesla for CRGO and 1.48 Tesla for conventional grade of amorphous core. These flux density values are with a 5% margin to the saturation flux density of electrical steel being used today. देखिए फॉलोइंग आर गिवन डाटाज ट्रांसफार्मर केवीए 50 केवीए, प्राइमरी टर्न्स N1 बराबर 500, सेकेंडरी टर्न्स N2 बराबर 100, प्राइमरी इनपुट वोल्टेज V1 बराबर 4000 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी F बराबर 60 हर्ट्ज. कैलकुलेशन, वी हैव ईएमएफ इक्वेशन फॉर ए ट्रांसफार्मर एज फॉलोज. V1 बराबर 4.44 फाई F N1, where phi is maximum flux. Therefore, phi बराबर V1 बटा के 4.44 इंटू F इंटू N1 यानी 0.03 वेबर. अकॉर्डिंग टू ISI 12/31/2012, what is the permissible voltage variation for domestic electric water heater plus minus 5%. Category specification title इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2012, पर्पज IS 12/31/2012 स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स used for domestic purposes. The standard aims to ensure the safety, performance, and energy efficiency of these appliances, which are commonly used for heating water in households. Scope: this standard covers electric water heater designed for heating potable water for domestic use. It outlines requirements related to the safety, construction, performance, and testing of these appliances. IS 12/31/2012 includes guidelines and requirements related to following aspects: content, safety requirements to prevent electrical hazards, construction material and design, performance parameters such as heating efficiency and temperature control, electrical and thermal insulation, making and labeling of appliances, testing methods, and criteria to verify appliance. What is the Napier frequency of the source free parallel RLC network? 1/2 RC.
Napier frequency alpha. Napier frequency is also known as attenuation. It is a measure of how fast the transient response of the circuit will die away after stimulus has been removed. Napier frequency is generally denoted by alpha. Napier occurs in the name because the units can also be considered to be Napiers per second. Napier being a logarithmic unit of attenuation. Napier frequency of sources free parallel RLC network is given by alpha बराबर 1 by 2 RC, where capital R equivalent resistance of the combined source, load and components. C capacitance of the capacitor component. Napier frequency of the sources free series RLC network is given by alpha बराबर R बटा के 2L, where effective resistance of the combined loads, sources and components, L inductance of the inductor component. Which of the following is the most common protection device that can make or break the circuit either manually or through remote control under normal operating conditions? Circuit breaker. Circuit breaker is the most common protection device that can make or break the circuit either manually or through remote control under normal operating conditions. A circuit breaker is a switching device that interrupts the abnormal or faulty current. It is a mechanical device that disturbs the flow of high magnitude fault current and in addition performs the function of a switch. A circuit breaker is mainly designed for closing or opening an electrical circuit, thus protecting the electrical system from damage. When the circuit breaker is closed, it acts as a short switch. Thus, before interruption, ideal circuit breaker should offer zero impedance. When the circuit breaker is open, it acts as an open switch. Thus, after the interruption, the ideal circuit breaker should offer infinite impedance. A good insulating material should not possess non-uniform viscosity. Concept. The insulator is a material which resists the flow of current. Characteristics of good insulating materials. A good insulating material has no possess the following characteristics. It should have extremely high insulation resistance. It should have high dielectric strength. It should have low thermal expansion. It should be non-inflammable when exposed to arcing. It should be resistant to oil or liquid gas, fumes, acid, and alkalis. It should have no deteriorating effect on the material contact with it. It should have good thermal conductivity. It should have high mechanical strength. It should have high thermal strength. Should be resistant to thermal and chemical deterioration. It should be resistant to moisture absorption. Uniform viscosity provides uniform electrical and thermal properties to liquid dielectrics. A series motor of resistance 1 ohm between the terminals runs at 800 rpm at 200 volt with a current of 15 ampere. Find the speed at which it will run when connected in series with a 5 ohm resistance and taking the same current at the same supply voltage. देखिए, in a DC motor back EMF is given by EB बराबर फाई जेड एन पी बटा के 60 है, where Z
इज द नंबर ऑफ कंडक्टर्स। देखिए यहाँ देखिए डीसी मोटर में सब कुछ कांस्टेंट होगा ये तीनों, यानी कि ई बी प्रोपोर्शनल एन, ई बी वन बटा के ई बी टू बराबर एन वन बटा के एन टू। अकॉर्डिंग टू गिवन इन इंफॉर्मेशन द सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। देखिए यहाँ पे आर्मेचर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। देखिए यहाँ पे आर्मेचर का बैक ईएमएफ ई बी वन है। देखिए इसमें पहले के अनुसार 15 एम्पियर करंट तथा 200 वोल्ट का सप्लाई है। बाई अप्लाइंग केवीएल वी गेट ई बी बराबर 200 माइनस 15 गुणे के 1 यानी 185 वोल्ट। इस समय देखिए एन वन का मान दिया हुआ है 800 आरपीएम। अब देखिए दूसरा प्रतिबंध, नाउ व्हेन द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड द सर्किट डायग्राम मॉडिफाइड एज। देखिए आर ए 1 ओम ई बी टू, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया गया 5 ओम का। अब देखिए अब भी 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। देखिए टर्मिनल पर 200 वोल्ट सप्लाई दिया जा रहा है। बाई अप्लाइंग केवीएल वी गेट ई बी टू बराबर 200 माइनस 15 कोष्टक में 1 प्लस 5 यानी कि 110 वोल्ट। लेटेस्ट लेट द स्पीड इन दिस इज एन टू, एन टू बराबर ई बी टू बटे के ई बी वन गुणे के एन वन यानी 110 बटा के 185 गुणे के 800 यानी 476 आरपीएम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अकर्स when the load voltage and load current are 1 by 2 of their maximum possible values। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एमपीटीटी, टू टर्मिनल लीनियर सर्किट ए, देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस आर बी, देखिए वी टी एच आर टी एच आर एल। द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम states that the maximum power is delivered to a load when the load resistance is equal to the source resistance। The maximum power across the load given by V max P max बराबर वी टी एच स्क्वायर बटे की 4 RTH। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम टर्मिनल वोल्टेज तभी प्राप्त हो सकता है जब यहाँ के आर टी एच का मान जो है कि शून्य हो जाए। जब आर टी एच का मान शून्य होगा तो जो लोड है उसके क्रॉस भी जो है कि वी टी एच ही वोल्टेज मिलेगा। बट ध्यान दीजिए यहाँ पे आर टी एच तथा आर एल दोनों समान है, तो जो लोड है उस पर जो विभवांतर मिलेगा वह वी टी एच का आधा मिलेगा। अब देखिए यदि आर टी एच का मान शून्य हो जाता तो करंट जो मिलता वह वी टी एच बटा के आर एल मिलता। बट देखिए यहाँ पे आर टी एच तथा आर एल दोनों समान है, तो यहाँ पे देखिए जो करंट मिलेगा वह वी टी एच बटा के 2 RL मिलेगा। मतलब कि जो मैक्सिमम करंट है उसका यहाँ पे आधा करंट मिल रहा है। तो देखिए व्हेन मैक्सिमम पावर फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड द वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज हाफ ऑफ द थेवेनिन वोल्टेज। कंसीडर थेवेनिन वोल्टेज वी टी एच। द वोल्टेज across the load VL बराबर वी टी एच बटा के 2। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज गिवन बाई वी टी एच माइनस वी टी एच बटे के 2 बटे के आर यानी वी टी एच बटे के 2 आर। ट्रांसफार्मर रेटिंग इज गिवन इन KVA because the total loss of the transformer depends on current voltage। देखिए ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन KVA because KVA is a combination of real power and the reactive power, as the copper loss depends on the current and the iron or core loss depends upon the voltage of the transformer. Thus, the total losses in a transformer depend upon KVA and not on the power factor of the load।
using which diode in a regulated power supply, the unregulated input voltage as compared to the regulated output voltage will be larger. Zener diode. देखिए जेनर डायोड इज यूज्ड इन ए रेगुलेटेड पावर सप्लाई. The Zener diode of or breakdown diode are basically the same as the standard PN junction diode, but they are specially designed to have a low and specified reverse breakdown voltage which takes advantage of any reverse voltage applied to it. DC input voltage from rectifier or smoothing circuit. देखिए V प्लस V इनपुट Vs 0 वोल्ट. देखिए सप्लाई करंट Is, रेजिस्टेंस Rs. देखिए यहाँ पे देखिए जेनर डायोड का प्रयोग किया गया है. देखिए यहाँ पे करंट रेगुलेटर में से जा रही है IZ. देखिए यहाँ पे IL करंट जा रही है. देखिए आउटपुट वोल्टेज जो कि रेगुलेटेड वोल्टेज VZ के समान है. देखिए यहाँ पे लोड लगा हुआ है RL. When it is biased in forward direction, it behaves like a normal signal diode passing the rated current. As soon as the reverse voltage reaches a predetermined value, the Zener diode begins to conduct in the reverse direction. This is because when the reverse voltage applied across the Zener diode exceeds the rated voltage of the device, a process called avalanche breakdown occurs. The current now flowing through the Zener diode increases dramatically to the maximum circuit value, and once achieved, this reverse saturation current remains fairly constant over a wide range of reverse voltage. The voltage point at which the voltage across the Zener diode become stable is called Zener voltage Vz. Find the effective RMS value of current. I बराबर 2 sin पाई टी प्लस 2 cos कोष्टक में पाई टी प्लस टी सन्स. देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. लेट ए साइनोसोडल एसी करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई ऑफ टी बराबर 2 sin पाई टी प्लस 2 cos कोष्टक में 100 पाई टी प्लस टी सन्स. यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला cos a प्लस बी बराबर cos a cos b minus sin a sin b. Now using the formula in above equation will get. देखिए साइन 100 पाई टी प्लस करड़ी में 3 cos पाई टी. अब देखिए इसमें फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा करड़ी में 2 एम्पियर. Which one of the following consists of an operational amplifier in inverting mode and a network of RC components, and the operational amplifier being in inverting mode? It serves two purposes of amplifying, and at its output exhaustion unshifted phase is obtained. RC phase oscillator. RC phase shift oscillator. A phase shift oscillator is an electronic oscillator circuit that produces sine wave output. This type of oscillator consists of a network of RC components and an operational amplifier connected in inverting mode. In the RC phase shift oscillator, a exogenous phase shift is generated by the RC network and another exogenous is generated by the operational amplifier, so the resulting wave is inverted by 360 Hz. The operational amplifier in inverting mode serves two purposes of amplifying
and at its output is 180 हर्ट्ज फेज शिफ्टेड। देखिए आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, देखिए सी सी सी। अब देखिए आर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, देखिए अर्थ, देखिए प्लस वी एस, देखिए आई वन, देखिए फीडबैक रेजिस्टेंस आर एफ, आउटपुट माइनस वी एस। A moving coil instrument of resistance 20 ohm gives a full scale deflection of 50 milliampere. Explain how the meter can be used to measure करंट अप टू 5 एम्पियर। देखिए 5 मिली एम्पियर का करंट जो है कि अमीटर से फ्लो हो सकता है मूविंग कॉइल से, बट यहाँ पर मेजर करना है 5 एम्पियर। तो सबसे पहले इस सर्किट को यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए आई का मान जो है कि 5 एम्पियर होगा, तथा जो आई एम है उसका मान जो होगा 50 मिली एम्पियर होगा। और देखिए यहाँ पे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यानी आर एम का मान जो होगा वो 20 ओम होगा। अब देखिए इसमें इस सूत्र में रख के आर एस एच का मान निकालेंगे। देखिए इस ब्रांच का और इस ब्रांच का दोनों का वोल्टेज सेम होगा। देखिए इस ब्रांच का और इस ब्रांच का विभव ईएमएफ सेम होगा। देखिए यहाँ पे ईएमएफ को दोनों को सेम किया गया है, तो देखिए यहाँ से यक्स का मान निकाल देंगे तो यक्स बराबर 0.02 ओम आ जाएगा। एक्सटेंशन रेंज ऑफ अमीटर, वी कैन एक्सटेंड द रेंज ऑफ अमीटर बाय कीपिंग ए शंट रेजिस्टेंस। देखिए here Rm internal resistance of the coil, RSH shunt resistance, I required full scale range, Im full scale deflection of current, as the two resistance Rm and RSH are in parallel, the voltage drop across the resistance is equal, Im Rm I minus Im RSH। यहाँ से हल करेंगे तो m का मान आ जाएगा I बटा के Im। M is called multiplying power। यहाँ से देखिए आंसर आ गया है। आइडेंटिफाई द फील्ड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन स्काडा, इट इज शोन इन द गिवन इमेज, पुश बटन। concept, a common form of push button switch is shown below। देखिए बटन, फिर देखिए थ्रेडेड नेक, बेस, देखिए एनसी टर्मिनल, एनओ टर्मिनल, एनसी टर्मिनल, नो टर्मिनल, एनओ। The threaded neck insert through a hole cut into a metal or plastic panel with a matching nut to hold it in place. Thus, the button faces the human operator while the switch contact resides on the other side of the panel. When pressed, the downward motion of the actuator breaks the electrical bridge between the two NC contacts, forming a new bridge between the NO contact. The schematic diagram symbol for this type of switch looks much like the real thing, with normally closed contact set on the top and normally open contact set below. Which of the following expression Which of the following expressions show correct relation between breaking current and making current of the circuit breaker? मेकिंग करंट बराबर 2.55 गुणे के ब्रेकिंग करंट। ब्रेकिंग करंट, it expresses the highest number of short circuit current that the breakers are capable of breaking under specified condition, the transient recovery voltage and power frequency voltage. It is expressed in kiloampere RMS.
At contact separation, the braking capacities are divided into two types: symmetrical braking capacity of circuit breaker. Asymmetrical braking capacity of a circuit breaker. रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट IB बराबर यस बटा के कौड़ी में 3 VL, where yes rating of the circuit breaker in MVA, VL line voltage in kilovolt. Making capacity, there is often the possibility of closing or making the circuit under short circuit condition. The capacity of a breaker to make current depends upon its ability to withstand and close successfully against the effects of electromagnetic forces. The forces are proportional to the square of maximum instantaneous current on closing. Therefore, making capacity is stated in terms of a peak value of current instead of RMS value. The peak value of current, including the DC component, during the first cycle of the current wave after the closure of the circuit breaker is known as making capacity. It is concerned with the first cycle of the current wave on closing the circuit breaker. This is because the maximum value of fault current possibly occurs in the first cycle only when maximum asymmetry occurs in any phase of the breaker. देखिए शॉर्ट टाइम रेटिंग, it is the period for which the circuit breaker is able to carry fault current while remaining closed. Normal current, it is the RMS value of current which the circuit breaker is capable of carrying continuously at its rated frequency under specified condition. The only limitation in this case is the temperature rise of current carrying parts. Commutator in DC generator. Commutator, brush. The commutator in a DC generator convert the AC armature current into pulsating DC. Therefore, the commutator acts as a rectifier in DC generator. The commutator ensures that the current from the generator always flow in one direction. The brushes in a DC machine are placed on the commutator in the polar axis. Brushes are used to collect the current due to induced EMF from the armature coils in a DC generator. Brushes are made up of carbon and graphite to reduce the wear and tear of the commutator. The average value of a full wave rectified voltage with a peak value of 66 volt 2 Vm बटे पाई फार्मूले पर रखकर हल कर देंगे. Average value of full wave rectified voltage. The average value of a full wave rectified voltage is the mean of all instantaneous values of the rectified voltage over one complete cycle of the input AC signal. It is a measure of the DC component of the rectified output. Working principle. In a full wave rectifier, both the positive and negative halves of the AC signal are converted to positive voltage. This means that the output voltage is always positive regardless of the input voltage polarity. The average value of this rectified voltage can be determined by integrating the rectified signal over one complete cycle and then dividing by the period of the cycle. Formula: the average value of a full wave rectified voltage with a peak value of Vm can be calculated using following 2 Vm बटा के पाई. This this understanding helps
in designing and analyzing power supplies and other electronic circuits that utilize rectification to convert AC to DC। देखिए रिलक्टेंस मोटर के बारे में कुछ फैक्ट। A reluctance motor is cheaper than any other kind of synchronous motor. A reluctance motor poor efficiency. The rotor of a reluctance motor rotates with constant speed. An amplifier of gain A is bridged by capacitor C as shown in the below circuit. Then the effective input capacitance is, देखिए फीडबैक कैपेसिटर, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, अर्थ। देखिए एम्पलीफायर सी बटा के 1 - ए। मिलर थ्योरम, दिस थ्योरम इज यूज्ड टू सेपरेट द feedback element of the operational amplifier into input and output impedance। देखिए इनपुट एम्पलीफायर, आउटपुट कैपेसिटर। देखिए इनपुट एम्पलीफायर, आउटपुट। देखिए यह अर्थ है, यही सेम का मॉडिफाइड सर्किट है। देखिए सी बराबर 1 - ए और यहाँ पे सी बराबर 1 - 1 बटा के ए। द इनपुट इम्पिडेंस इज गिवन बाई सी इनपुट बटा के सी बटा के 1 - ए। द आउटपुट कैपेसिटेंस इज गिवन बाई सी आउटपुट बराबर सी कोष्टक में 1 - 1 बटा के ए। The effect of leading power factor on the voltage regulation of an alternator is decreasing in nature। voltage regulation of an alternator, देखिए it is defined as the rise in voltage when a full load is removed divided by rated terminal voltage when speed and field excitation remains the same। देखिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन E0 - V बटा के भी। देखिए आई ए कोष्टक में आर एस कास फाइव प्लस माइनस एक्स एस साइन फाइव बटे के भी गुणा के 100। ई नोड नो वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज। भी फुल लोड वोल्टेज। आई ए आर्मेचर करंट, आर एस सिंक्रोनस रेजिस्टेंस, एक्स एस सिंक्रोनस रिएक्टेंस। वोल्टेज रेगुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन लोड करंट एंड पावर फैक्टर। Classification of overhead transmission line based on the length। The transmission line is classified as short transmission line length 80 किलोमीटर से कम अथवा 80 किलोमीटर तक। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू end condenser method, nominal pi method and nominal T method। अब देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन लेंथ 200 किलोमीटर से एवं एंड कंडेंसर मेथड। देखिए सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई करंट, देखिए रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस। देखिए चार्जिंग करंट, कैपेसिटर। देखिए और रिसीविंग एंड करंट। और देखिए यह रिसीविंग एंड वोल्टेज। इन द इंड कंडेंसर मेथड द कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज assumed to be concentrated at the receiving end, the load end of the line। अब देखिए नॉमिनल पाई मेथड। देखिए सप्लाई वोल्टेज, देखिए सप्लाई करंट, एम पॉइंट। देखिए देखिए I1 चार्जिंग करंट। देखिए Y/2 एडमिटेंस। देखिए I2 करंट। देखिए यह सीरीज
इम्पीडेंस आर प्लस जे एक्स। देखिए यह एडमिटेंस। अब देखिए यह एन पॉइंट रिसीविंग एंड करंट, रिसीविंग एंड वोल्टेज। In the nominal pi model, a medium transmission line is represented by a series impedance which accounts for the line's resistance and inductance, and shunt admittance which account for the line capacitance, that are split between the sending end and receiving end of the line. अब देखिए नॉमिनल टी मेथड, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई करंट। देखिए यह सीरीज इम्पीडेंस Z/2। अब देखिए वीएम पॉइंट। देखिए फिर दूसरा इम्पीडेंस Z/2। देखिए यह एडमिटेंस, रिसीविंग एंड करंट, रिसीविंग एंड वोल्टेज। द नॉमिनल टी मॉडल, द ट्रांसमिशन लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सीरीज इन impedance at the center of the line, two shunt admittance located at both the sending and receiving ends of the line. The double energy transient occurs in the RLC circuit. Double energy transient in RLC circuit. The concept of double energy transient is specific to RLC circuits. It involves the exchange of energy between the inductive L and capacitive C elements within the circuit. In an RLC circuit, energy can be stored both in the magnetic field and the inductor field of the inductor and in the electric field of the capacitor. When a transient occurs, such as when the circuit is suddenly switched on or off, the energy stored in this field can oscillate between the inductor and capacitor. This oscillation is due to the fact that inductor resists change in current while the capacitor resists change in voltage. As the energy oscillates, it causes a transient response that can be observed as damped oscillation in the circuit's current and voltage. Mathematical representation. The voltage across the capacitor Vc and the current through the inductor IL can be described by second order differential equations. The natural response of the circuit can be derived from the characteristics equation, which is quadratic equation in terms of the Laplace variables. The solution of this equation typically involves complex conjugate roots indicating oscillatory behavior analysis. When the circuit is subject to a step input, the inductor initially opposes the change in current, causing a rapid voltage change across the capacitor. The capacitor then discharges through the inductor, causing the current to increase and the voltage to decrease. This process continues with the energy oscillating between inductor and the capacitor until the resistive element dissipates the energy, causing the oscillation to damped out. Conclusion. The double energy transient is a characteristic phenomenon of RLC circuits where energy oscillates between the inductive and capacitive component. This behavior is not observed in purely inductive or RC or RL.
circuits as they do not have both inductive and capacitive element to facilitate this energy exchange. In electrical installation, if a separate circuit is installed for fans only, the number of fans in that circuit should not exceed 10. Like a light and fan sub-circuit, there are maximum 10 points in light and fan sub-circuit as per Indian electricity rules. The maximum load for a single light and fan sub-circuit should not exceed 800 watt. Power sub-circuit, the maximum load for power sub-circuit should not exceed 3000 watt. The number of outlets restricted to 2 in each power sub-circuit. If the power load exceeds above 3000 watt, a separate power circuit is taken. In a short transmission line, the reactance and resistance are equal. Find the characteristics of the load if the voltage regulation is 0. देखिए 0.707 लीडिंग concept. In a short transmission line, the length of the line is below 80 km and the line voltage is completely low, below 69 kV. Hence, the capacitance effects of the line are extremely small, thus neglected. Voltage regulation IR cos phi plus minus IX sin phi बटे के भी गुणे के 100 आर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आई भी कोष्टक में आर कास फाइव माइनस एक्स साइन फाइव कोष्टक बंद बराबर 0 लीडिंग पावर फैक्टर टेन फाइव बराबर आर बटा के एक्स इफ आर बराबर एक्स देन टेन फाइव बराबर 1 यानी फाइव बराबर 45 अंश एंगल पावर फैक्टर कास 45 अंश बोले तो 7.707 लीडिंग पावर फैक्टर. The phenomenon of oscillation of the rotor about its equilibrium position is called hunting. देखिए, the damper winding in a synchronous motor performs two functions: prevent hunting, damped out oscillation, provides starting torque, made self-starting. Under normal running, under under normal running under normal running conditions, damper windings does not carry any current. Hunting is a phenomenon that occurs in synchronous motor due to varying load or supply frequency. Cases of hunting: periodic variation of load, oscillation of the rotor, sudden change in load, fault occurring in the system when supplied by the generator, sudden change in the field current, cyclic variation of the load torque. Effect of hunting: it can lead to loss of synchronism. It can cause variation of the supply voltage, producing undesirable lamp flicker. The possibility of resonance condition increases if the frequency of the torque component becomes equal to that of the transient oscillations of the synchronous machine. Resonance may take place. Large mechanical stresses may develop in the rotor shaft. The machine losses increases and the temperature of the machine rises.
The Hopkinson test on DC machine is conducted in order to determine rated losses of DC machine. Hopkinson test is used for the testing the efficiency of a DC machine. It is a full load rated load test and it requires two identical machines which are coupled to each other. One of these two machines is operated as a generator to supply the mechanical power to the motor and the other is operated as a motor to drive the generator. Hopkinson test is also called back-to-back test or regenerative test. The Hopkinson test, also known as the back-to-back test or regenerative test, is a method used for testing large electrical machines, particularly pairs of identical machines like DC machine, motors and generator, or transformers. This test is highly effective for determining the efficiency of such machines without requiring them to be loaded conventionally, which can be challenging and insufficient for large high equipment. Principle: the basic principle behind the Hopkinson test is to connect two identical machines mechanically and electrically in such a way that one machine operates as a motor and drives the other machine, which operates as a generator. The generated electrical energy from the second machine is then fed back to back the first machine, creating a regenerative loop. Advantage: efficiency measurement enables accurate efficiency measurement of large electrical machines without requiring heavy external load. Economical: it is more economical in terms of energy consumption since it primarily requires power to cover system losses. It is a valuable method in situations where conventional loading tests are impractical or uneconomical. Safety and practicality: safer and more practical for testing large machines that would otherwise require large and potentially impractical load arrangement. Limitation: identical machines required. The test required two identical machines which may not always be available. दूसरा, initial setup complexity: the initial setup and calibration can be complex and time consuming. तीसरा, assumption of equal losses: the test assumes that the losses in both machines are similar, which may not hold true in all operational conditions or if the machine have aged differently. BC 147 is the transistor used for amplification of AF signal. BC 147 is the transistor used for the amplification of AF signals. Types of amplifiers: पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर जिसे आरएफ एम्पलीफायर कहते हैं. RF amplifier or radio frequency amplifiers. They increase the amplitude of radio frequency waves 20 kHz to 300 GHz. These are found in satellites, cell phone towers, and in dish antennas. दूसरा ऑडियो फ्रिक्वेंसी
AF amplifier. AF amplifiers are audio frequency amplifiers. They increase the amplitude of waves from 20 Hz to 20 kHz. These are widely used in speakers, microphones, earphones, etc. For what value of resistance across terminal A, B, the power transfer will be maximum. देखिए यहाँ पे ए और बी के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे तो आएगा। देखिए जो वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो यह शॉर्ट हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि जब यह शॉर्ट हो जाएगा तो ये जो इसके पहले जो 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, पूरा टोटल करंट इससे फ्लो कर जाएगी। मतलब कि देखिए जो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टर मतलब कि जो आ रहा है वह 6 ओम आ रहा है। मतलब जो सर्किट बनेगी वो देखिए VTH वोल्टेज होगा और इसके सीरीज में 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए जो लोड लगेगा वो अभी 6 ओम का होना चाहिए। फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स एट टर्मिनल X Y इन द फिगर बिलो। तो देखिए सबसे पहले नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो जो X दिया हुआ है इसके क्रॉस एक तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखिए वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट कर देंगे तथा वोल्टेज सर्किट को शॉर्ट कर देंगे। देखिए ये दोनों जो है पैरेलल हो जाएंगे तो हो जाएगा 20 गुणे के 10 बटा के 30 यानी कि रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा 6.67 ओम। अब देखिए नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट निकालेंगे तो इसके लिए देखिए जो एक्स वाई के यहाँ पे एक ठो करंट सोर्स मानेंगे जिसमें एक ठो करंट है जो एक्स से वाई की तरफ बढ़ रही है, उसका मान IN है। यही नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट है। देखिए यहाँ इस ब्रांच में मान लेते हैं कि करंट जो फ्लो कर रही है वो I1 है तथा यहाँ पे फ्लो कर रही है वो मान लीजिए I2 है। तो देखिए यहाँ से ऊपर से करंट आ रही है तो देखिए इस पर जब KCL लगाएंगे तो हो जाएगा IN बराबर I1 प्लस I2। अब देखिए इन दोनों में इसमें और इसमें दोनों में जो है कि KVL लगाएंगे तो देखिए करंट I1 इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, अतः हो जाएगा 30 माइनस 20 I1 बराबर 0। तो देखिए I1 का मान यहाँ से आ जाएगा 3 यहाँ से आ जाएगा 3 बटा के 2 बोले तो 1.5 एम्पियर। और देखिए अब इसमें जब KVL इसमें भी KVL लगाएंगे देखिए करंट जो है कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो देखिए जो यहाँ पे देखिए माइनस से प्लस की तरफ फ्लो हो रही है तो इसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे 18 वोल्ट। और फिर देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के साथ करंट को गुणा में नेगेटिव लेंगे यानी 10 ओम यानी कि यहाँ बराबर 0। तो देखिए यहाँ से जो हो जाएगा I2 का मान वह 1.8 एम्पियर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखें IN बराबर I1 प्लस I2 तो दोनों को जोड़ देंगे तो IN का मान जो होगा वह 3.3 एम्पियर आ जाएगा। मतलब कि नॉर्टन इक्विवेलेंट जो सर्किट है वह इस प्रकार बनेगी। देखिए 3.3 एम्पियर करंट सोर्स और देखिए इसके समांतर में एक तो रेजिस्टेंस बॉडी बनेगा 6.67 ओम। और देखिए यहाँ पे एक तो लोड लगा देंगे। देखिए
concept, Norton's theorem, states that any linear circuit containing several energy source and resistance can be replaced by a constant current source in parallel with a single resistor. It is an analytical method used to change a complex circuit into a simple equivalent circuit consisting of a single resistance in parallel with a current source. A linear network containing several energy sources and resistance देखिए आर एल ए एंड बी देखिए यहाँ पे आई एस नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट आर एस देखिए समांतर में नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए आर एल लोड में स्टेप्स टू फॉलो हर नॉर्टन्स थ्योरम calculate Norton's current source by removing the load resistor from the original circuit and replacing it with a short circuit. Calculating the current through a shorted wire. Calculating the Norton resistance by removing all power sources in the original circuit. Voltage sources shorted and current source open. Calculating total resistance between the open connection points. Draw the Norton equivalent circuit with the Norton current source in parallel with the Norton resistance. The load resistor reattached between the two open points of the equivalent circuit. देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो आयन करंट फ्लो कर रही है वह ए वोल्टेज सोर्स और ए वोल्टेज सोर्स दोनों द्वारा फीड की जा रही है। अतः 30/2 प्लस 18/10 यानी 3.3 एम्पियर। ASCR इज ए यूनिडायरेक्शनल देखिए ASCR इज ए यूनिडायरेक्शनल स्विच since the gate current can only be positive and it operates in only one quadrant of IV characteristics. Unidirectional devices are semiconductor devices that allow current to flow only in one direction, whereas bidirectional devices allow the flow of current in both the directions. The unipolar device is a device that the current conduction is due to only holes or electrons, whereas in bipolar devices the current conduction is due to both hole and electrons. देखिए डिवाइस सर्किट डायग्राम करंट फ्लो वोल्टेज विथ स्टैंडिंग कैपेबिलिटी एससीआर देखिए एनोड गेट कैथोड यूनिडायरेक्शनल देखिए वोल्टेज विथ स्टैंडिंग कैपेबिलिटी बाइपोलर देखिए ट्रायक देखिए जो ट्रायक होता है इसका फिगर इस प्रकार होता है कैथोड एनोड गेट देखिए यह बाई डायरेक्शनल होता है इसमें करंट जो फ्लो होती है वह बाई डायरेक्शनल होती है यह भी यूनिपोलर है। अब देखिए जीटीयू का देखिए फिगर एनोड कैथोड गेट देखिए यह भी यूनिडायरेक्शनल करंट इसमें फ्लो होती है तथा देखिए वोल्टेज विथ स्टैंडिंग कैपेबिलिटी बाइपोलर मॉसफेट देखिए ड्रेन सोर्स गेट देखिए बॉडी डायोड देखिए यह अंदर की तरफ तो जा रही है एन चैनल है देखिए करंट फ्लो बाई डायरेक्शनल वोल्टेज विथ स्टैंडिंग कैपेबिलिटी यूनिपोलर आईजीबीटी देखिए CCG देखिए यह भी यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो होती है वोल्टेज विथ स्टैंडिंग कैपेबिलिटी बाइपोलर है। Error are introduced in the measurement by wattmeter due to mutual inductance between current coils and pressure coils. Electrodynamic type wattmeter देखिए सप्लाई वोल्टेज
फिक्स्ड कॉयल, फिक्स्ड कॉयल, देखिए एक ही कॉयल है, इसके दो पार्ट हैं। अब देखिए सीरीज रजिस्टर, मूविंग यूनिट, देखिए प्रेशर कॉयल, लोड। इट कंटेन्स टू कॉइल्स, ए फिक्स्ड कॉयल, करंट कॉयल एंड ए मूविंग कॉयल कॉल्ड प्रेशर कॉयल। देखिए मूविंग कॉयल or voltage coil. The fixed coil is used to carry the current and is connected in series with the load in any circuit. The moving coil carries the current directly proportional to the voltage and is connected across the voltage. The moving coil is assumed to be highly resistive nature. जो मूविंग कॉइल होती है वह हाईली रजिस्टिव नेचर की होती है, इसको बात को ध्यान रखिए। केसेस ऑफ एरर इन वाटमीटर, pressure coil at lagging power factor loads due to effect of inductance, the voltage coil current will become nearly equal in phase with the load current, so the driving torque increases and makes the wattmeter read high. Hence, power factor becomes lagging and leads to a high reading. Pressure coil. Apart from inductance, the voltage coil also possesses the effect of capacitance, which is due to the inter-turn capacitance of the series resistance. So the wattmeter reads high at lagging power factor loads and low at leading loads. अब देखिए म्यूचुअल इफेक्ट्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट। The mutual inductance effect, the voltage coil and the current coil increases the phase angle. Since the error is directly proportional to the phase angle, the mutual inductance between the coils affects the error. History magnetic field. The history magnetic fields, external magnetic field, may disturb the operating field, as it is quite weak in the case of electrodynamometer. So if the external field aids the main field, then the meter reads high, and if it opposes the main field, then the meter reads low. टेम्परेचर एरर, केसेस ऑफ एरर वाटमीटर है। टेम्परेचर एरर, चेंज इन द प्रेशर कॉइल रेजिस्टेंस is caused due to variation in temperature. Due to this temperature variation, the controlling torque produced by the spring movement is also affected. A generating station has a connected load 120 megawatt and it supplies maximum demand 60 megawatt. The number of units generated in a year is 48 गुणे के 10 के पावर 7 किलोवाट घंटा. What will be the demand factor of generating station? 10.5. देखिए ध्यान दें, डिमांड फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड बटे के कनेक्टेड लोड। देखिए यहाँ पे कनेक्टेड लोड 120 मेगावाट और मैक्सिमम डिमांड 60 है, यानी 60 बटा के 120 बोले तो 10.5 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट, द डिमांड फैक्टर इज ए, द डिमांड फैक्टर ऑफ ए प्लांट इज गिवन बाई डिमांड फैक्टर बराबर मैक्सिमम डिमांड बटे के कनेक्टेड लोड। कैलकुलेशन, मैक्सिमम डिमांड 60 मेगावाट, कनेक्टेड लोड 120 मेगावाट, डिमांड फैक्टर बराबर 60 बटा के 120। एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखिए द लोड फैक्टर ऑफ ए प्लांट इज गिवन बाई एवरेज डिमांड बटा के मैक्सिमम डिमांड। अब देखिए द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ऑफ ए प्लांट इज गिवन बाई एवरेज डिमांड बटा के प्लांट कैपेसिटी। In a conductor, the effective resistance and the ohmic resistance are the same when
current is uniformly distributed in the conductor cross section. If the resistance is constant over a large range of value of current and voltage, the resistor is referred to as an ohmic device. Hence, if the current is uniformly distributed in the conductor cross section, the effective resistance of a conductor will be the same as ohmic resistance. Skin effect. Skin effect is the tendency of an alternating electric current to become distributed within a conductor such that the current density is largest near the surface of the conductor and decreases with greater depth in the conductor. The phenomenon arising due to unequal distribution of current over the entire cross section of the conductor is referred to as the skin effect. Such a phenomenon does not have much role to play in case of a very short transmission line, but with increase in effective length of the conductor, the skin effect increases considerably. The distribution of current over the entire cross section of the conductor is quite uniform in the case of a DC system, but in alternating current system, current tends to flow with higher density through the surface of the conductor, the skin of the conductor, leaving the core deprived of current, increased effective resistance but reduced effective internal reactance of the conductor. The cross section area of a round conductor available for conducting DC current DC resistance. The cross section area of the same conductor available for conducting low frequency AC resistance. The cross section area of the same conductor available for conducting high frequency AC resistance. Factors affecting skin effect in transmission line. Frequency. The skin effect increases with the increase in frequency. Diameter. It increases with the increases in diameter of the conductor. The shape of the conductor. Skin effect is more in the solid conductor and less in the stranded conductor because the surface area of the solid conductor is more. Type of material. Skin effect increase with the increase in permeability of the material. Permeability is the ability of the material to support the formation of the magnetic field. Important point: the skin effect is negligible if the frequency is less than the 50 Hz and the diameter of the conductor is less than 1 centimeter. In the standard conductors like ACSR, aluminum conductor steel reinforced. The current flow mostly in the outer layer made of aluminum while the steel near the center carries no current and gives high tensile strength to the conductor. The concentration of current near the surface enabled the use of an ACSR conductor. Which insulating material is widely used? Yes, molded parts such as lamp holder terminal blocks and small panels. Bakelite. Usage of various insulating material. Bakelite. It is widely used for small molded parts such as lamp holders, terminal blocks, and small panels etc. Mica. Mica is non-toxic material. It is one of the important ingredient in makeup and various cosmetics. It is used in blushes, lipstick, lip gloss, eyeliner, eyeshadow, foundation, glitters, hair, nail polish, moisturizing lotions etc. Marble and state. Marbles are used principally for building and monuments, interior decoration, statuary, table tops, and novelties.
where slate is most frequently used for floor, fireplace, surrounds, and hearths, bathroom, etc. Porcelain is used for tableware, decorative objects, laboratory equipment, and electrical insulators. The voltage across a 11 ohm resistor in the circuit shown below is, देखिए 10 वोल्ट सोर्स लगा हुआ है और देखिए यह 4 ओम का जो है कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये देखिए 11 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसके पास जो वोल्टेज V1 है, देखिए यह डिपेंडेंट सोर्स लगा है, इसका मान 19 V1 है। इसको हल करना है तो देखिए इसमें KVL लगाएंगे। तो देखिए यहाँ जो 10 वोल्ट की बैटरी है, इसमें इस साइड नेगेटिव टर्मिनल, इस साइड पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो देखिए जो, और देखिए यह पूरा जो 10 जो 4 ओम का रजिस्टर है, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये है, तो ये वाला जो वोल्टेज है यहाँ चलाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। अब देखिए जो ये जो लूप है, इसमें KVL लगा देंगे। तो देखिए माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 19 V1। देखिए फिर प्लस V1, देखिए फिर आगे माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो 10 वोल्ट है, प्लस 10 वोल्ट बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 20 V1 बराबर -10, यानी V1 बराबर हो जाएगा -1/2 वोल्ट। देखिए जब इन सबके अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज दिया हुआ है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस वाल का इसमें कोई मतलब नहीं है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द feet of a person standing in a substation with one step during the flow of earth fault is called step potential concept. When a fault occurs, the fault current flow to the ground due to which the potential gradient near the electrical equipment developed. This potential gradient may affect a person in two ways, either by step-to-step contact or by touch contact. Step potential. Step potential is the potential difference between the feet of a person standing on the floor of the substation with 0.5 meter spacing between the one step during the flow of fault current through the ground system. देखिए टच potential. Touch potential is a potential difference between the figures of a raising hand touching the faulted structure and the feet of the person standing on the substation floor. To eliminate these and protect from the fault, we are using earthing for the operating personnel. Find the value of G equivalent in the given circuit. G इक्वलेंट, जी को हम कंडक्टेंस से डिनोट करते हैं। तो देखिए जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। अतः इसमें यदि सीरीज में दो कंडक्टेंस लगे रहेंगे तो उसके लिए रेजिस्टेंस का उल्टा वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि दोनों जैसे S1 S2 दो कंडक्टेंस लगे हों तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा S1 गुणे के S2 बटा के S1 प्लस S2, इस तरह लगेगा। इसको लगाकर हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10 सीमेंस। What does the convection mode of heat transfer represent? How heat passes through fluid? Terminology in AC waveform. An alternating voltage or current changes continuously in magnitude and alternators direction at regular interval of time. It rises from 0 to maximum positive value, falls to 0, increases to maximum in the reverse direction and falls back to 0 shown again. देखिए अल्टरनेशन, वन
Half cycle of an alternating quantity is called an alternation. An alternation span 180 अंश electrical.